Yeah, very good morning to all of you. Jai Jagannath. This is your educator Abinash Pradhan and I welcome you all to the official YouTube channel Abinash Pathshala. आमे जीएस रो डिस्कशन करूथलु आजी गोटे सेशन तमान को पाई यूपीएससी रो पीवाईक्यू आज हमें सॉल्व करबा. सो यू विल बी थिंकिंग सर ओपीएससी रो भी पीवाईक्यू. सो ओपीएससी रो पीवाईक्यू मो ऑलरेडी कराउची त माने जो माने मते जॉइन करथिलो व्हाट्सएप ग्रुप रे. आई हैव बीन शेयरिंग द लिंक्स. आमे गूगल मीट रे तार डिस्कशन करूछु. जो माने भी इंटरेस्टेड अछो बाकी तुम माने भी जॉइन करि परिबो. दैट इज टोटली फ्री टू ऑल ऑफ यू. आज ई सेशन रे हमें डिस्कशन करबा यूपीएससी रे लास्ट जो पीवाईक्यूज आमर अच्छी ता भितर पॉलिटी रे चैप्टर वाइज मुझे क्वेश्चन करी. तो आज पॉलिटी रो क्वेश्चन करबा. ठीक अच्छे. सो बिफोर यू गेट स्टार्टेड लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. समस्त क्लियर अच्छी. चैट सेक्शन रे टिके एक्टिव हो जाओ बोले. ठीक शेयर करनियो लिंक निज सांग मान सहित जिते पार टे शेयर करनियो. आम स्टार्ट करवा सेशन को. ठीक अच्छे. ओके जस्ट अ सेकेंड. ओके यस. सो गोटे काम करिए मु वीडियो को ऑफ करूची. आम डायरेक्ट जीवा क्वेश्चन ऊपर को मु क्वेश्चन शो करेबी. माने वीडियो छोटो कर देला. ओके. हाँ the questions visible. समस्त क्वेश्चन विजिबल अच्छी. यस क्वेश्चन विजिबल. फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा. एंड द क्वेश्चन इज गिवन कि इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 रे जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हेतिला द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज हु. 1995 रे क्वेश्चन गाइस देखो पीवाईक्यू जेते जेते सारी परिबो सेते भलो बिकॉज यू नो दैट क्वेश्चन रिपीट होची बार बार. ओके. सो तुम जानिया दरकार वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल जवाहरलाल नेहरू थे. तो यार आंसर होची जवाहरलाल नेहरू. तुम जानी दरकार कि जो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 रे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हैला. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज यू नो एक्टेड एज द इंटरिम गवर्नमेंट आल्सो. तो मैंने जानी कि जो दिन एज अ पार्लियामेंट वर्क करतला से दिन जीबी मावलनकर ताको प्रिसाइड करतले. जो दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिसाब रे जाउतला राजेंद्र प्रसाद ताको ये करतले. राइट. So here you can see the explanation. The first interim government was announced on 24th August 1946. By the way, interim government, this one is that different. माने constituent assembly दीटा काम करतला. एटा होची ता आगुरु एटा because 24th August 1946 with Jawaharlal Nehru as the vice president of the executive council. Function with a great degree of autonomy and remained in the power until the end of British rule, after which it was succeeded by the dominion of India and Pakistan. ठीक है समस्त क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट को आसीबा. देखो प्रीएम्बल रू डायरेक्ट क्वेश्चन आछन. प्रीएम्बल को एटी लिखि दिया छि विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this X is written here. That means you have to fill the blank. Direct question. Do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. 26th November 1949. 26th day of November 1949. Option B will be the right answer. And 8 आउची question. सो एमिति डायरेक्ट क्वेश्चन आसीथिला आसुची एमिति भी. ओके. सो यार आंसर तमर रही जिवो कोन 26th day of. Here it is the explanation. Day of November 1949. On this day the constitution received the signature of the president of the constituent assembly and it was declared as passed. The constitution as adopted on 26th November 1949 सेइतरे गोटे प्रिएम्बल थिला 395 आर्टिकल्स आ 8टा शेड्यूल थिला. ठीक अछि. क्लियर समस्त डन. तापर 3 नंबर क्वेश्चन को आसीबा.
क्वेश्चन इज गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देखो हाईलाइट करो करेक्ट इनकरेक्ट नॉट ट्रू से जिनस को देखिबो नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो बहुत ही बड़ वी कैन से कि तार वेटेज अधिका थिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे सेटा रिफ्लेक्ट करे बहुत जगह रे है ना 60 to 70% फ्रॉम दिस पार्ट ओनली सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो इंपोर्टेंट फीचर तुम को मन रखियो पड़िबो फर्स्ट कहि कि डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस सो कि कहितले कि नॉट ए फीचर तुम जानिए दरकार डायरकी जो प्रोविंसेस रे लागू होइतला सेटा 1919 रो मॉन्टेग-चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म टाइम रे बट एज वेल एज इन द प्रोविंसेस लिखी विच इज फॉल्स ए टाइम रे तुम सेंटर वाला लागू होइतला सो एटा फॉल्स अछि नॉट ट्रू पचातला बाइकैमरल लेजिस्लेचर ठीक अछि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ठीक अछि ऑल इंडिया फेडरेशन भी ठीक अछि सो यार आंसर हे जो पिले डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविंसेस एटा अछि भूल ठीक अछि so you can see here diarchy at the center as well as in the provinces is not a feature of government of India Act 1935 as the act abolished diarchy in the provinces it abolished kartila but introduced diarchy at the center the diarchy in the provinces was introduced by the government of India Act 1919 jota Montague-Chelmsford reform boli kuha jaye 1935 act also provides bicameralism in 6 out of the 11 provinces such as Bengal Bombay Madras Bihar Assam United Provinces jota amar UP jebe the act also provided for an all India federation consisting of provinces and princely states. However, the federation did not come into existence. This one is the point. So these explanations you need always तुमको बुझिवार अछि कि काहे कि एटा फॉल्स हैला काहे कि ट्रू हैला तार बैकग्राउंड तार फोरग्राउंड एटा कोनते एनालिसिस पिले ठीक अछि बुझि पारछ Which of the following statements correctly describe the fourth schedule of Indian Constitution? For fourth schedule talks about the seats to the Rajya Sabha. So it allocates seats in the Council of States. Rajya Sabha is also known as the Council of States. So this one is the answer. Option C. So your answer is it contains the provision as the allocation of seats in the Council of States, that is Rajya Sabha, from each of the state in union territory. The number of members varies from state to state. Jemti Article 82 hisab re. A allocation of seats in Council of States to be filled by representatives of the states and the union territories shall be in accordance with the provision in that behalf contained in the fourth schedule. Done guys? बुझी वाला समझते या जय जगन्नाथ चलो नेक्स्ट को जीवा वेरी गुड मॉर्निंग समस्त पे नेक्स्ट होची मैच करिवार अछि तमे देखो आर्टिकल्स गुडा को मैच करके आंसर करिवार अछि तुम मन को एका थरे देखा जाऊ तुम मन को विजिबल ना समस्त ठीक अछि विजिबल ओके सो आर्टिकल 54 तो तुम जानि कि भाई 52 ऑनवर्ड्स आमर प्रेसिडेंट करो 54 टा तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सो 1 हबो A1 दीटा मात्र ऑप्शन बाकी दीटा को तुम एलिमिनेट करि परिबो हैला आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दिस इज आल्सो ट्रू 1 2 ठीक अछि आर्टिकल 155 164 ए दीटा देखिबार अछि 155 होची अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट व्हिच इज ट्रू आउ तमरो होची 3 हे गला 3 माने ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आउ देखो आर्टिकल 164 कोन अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक अछि ये होची कथा पहले डन समझ क्लियर है ओके वेरी गुड तो ये होची कथा 91 माइनस कर दवार अछि यस तो तुम्हारा आंसर है जो सीटा क्लियर समझ तुमको ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैथ्स वाला आउडे क्वेश्चन तुम मन को स्क्रीन रे आई होप समझ तो विजिबल अछि हाँ हियर इट इज देखो तो सी कहि कि द कॉन्स्टिट्यूशन 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन अकॉर्डिंग द स्टेटस टेरिटरी ऑफ द टू दिल्ली राइट सो वो 69th अमेंडमेंट तो माने मन रखिया दरकार एटा दिल्ली पाई 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 75th 73rd 74th तो सामान्य समझते जान 75th टा कौन 75th होची एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल ट्रिब्यूनल्स ओके 80th कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे एटा बहुत जन को जाना नथिबो हैला 80th होची एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन एंड 83rd होची तमरा होची जे नो रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश
सो एटा एग्जैक्ट माने तुमको मन रखिबार अछि अमेंडमेंट एंड एडीआर सॉल्यूशन देछि पले ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एटा पूरा पूरा यू कैन से कि भाई पूरा फैक्चुअल थिला है ना चलो नेक्स्ट पुनी मैच वाला एटा समस्त कहि देबो एटा समस्त कहि दियो आगो फटाफट फटाफट एक क्वेश्चन आंसर दियो देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट यूएस concurrent list Australia India as a union of states with greater power to the union this is Canada हाँ कि नहीं बोले समझ तो क्लियर आंसर है जो ए होची तुम्हारो 3 बी होची 5 3 5 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज जो तुम्हारा करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन डी इज जो तुम्हारा करेक्ट आंसर ठीक है समझ तो क्लियर बोले नेक्स्ट कुछ 8 नंबर क्वेश्चन with reference to the constitution of India which one of the following pairs not correctly matched एमान को भीतर कोटा not correctly matched आंसर कहला फटाफट आंसर किए बोले आंसर फॉर दिस क्वेश्चन not correctly match तो मैं जानी जो ये बार बार क्वेश्चन रे आसुची पिले मैं जानिया दरकार कि जो स्टॉक एक्सचेंज अच्छी स्टॉक एक्सचेंज बिले कंकरेंट लिस्ट नहीं तो यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन हियर द स्टॉक एक्सचेंज stock market with concurrent list not correctly matched stock exchange and features market are mentioned in the entry 8 of union list so it a union list of 7th in the 7th constitution 7th schedule of Indian constitution 7th constitution 7th schedule ले हमर कोन अछि तीनटा लिस्ट अछि जेमिति यूनियन लिस्ट रे हमर 100 आइटम स्टेट लिस्ट रे हमर 61 आइटम एंड तुम्हारा कंकरेंट लिस्ट रे तुम्हारा 47 आइटम्स ये सुनो ठीक है ये होची कथा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नेक्स्ट 47 ना 52 एटा 52 आइटम्स पांचटा आसी एपट को ऐड हेतला ना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखो एंड सी कहिछि गिवन इज और करेक्ट मान को भीतर कोटा करेक्ट पचारछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 40 पार्ट्स is it correct no sir 40 parts 9 hela second there are 390 articles of the constitution in all no 390 articles अछि ki तापर देखो which 9th 10th 11th 12th were added in the yes 9th was first constitutional amendment ये होची 10th रा होची 52nd रे आडेला ये 73rd रे आ ये होची 74th रे ठीक अछि 74th रे तो तुम्हारा आंसर है जिवो ओनली सी ये गला तुम्हारा कथा डन क्लियर समझ तुमको हाँ ये होची कथा ओके बाकी सब भूल अछि नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखो हु among the following was the chairman of the union constitution committee union word देखला माने जवाहरलाल नेहरू यू कैन से जवाहरलाल नेहरू होची आंसर है ना की वर्ड एटा जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमिटी रे बी आर अंबेडकर थिले स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद ठीक अछि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी राजेंद्र प्रसाद थे वेरी गुड 11 नंबर क्वेश्चन को हमें आसीबा जे which one of the following subjects is under the union list of 7th schedule of Indian constitution तो 7th schedule ले एमान को भीतर कोटा मेंशन अछि बेले तो तुम्हारा आंसर ही जो बेले रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स एटा हमर यूनियन लिस्ट अछि तो लिस्ट रो क्वेश्चन सब वर्ष आछि बेले ओपीएससी रे भी पचारछि बी रेडी गाइस तुमन को रेडी रहिवार अछि ओके नेक्स्ट वन which schedule of the constitution of India contains the provisions for the administration and control of scheduled areas कोटा रे अछि 5th schedule ले अछि है ना 6th schedule ले तुम्हारा AMTM वाला कथा अछि सो एटा इजी ता थिला 5th schedule देखो है ना और 6th schedule ले तुम्हारा आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम वाला एंड अरुणाचल प्रदेश वाला कथा अछि हैला एटा बाय द वे सेतल अरुणाचल प्रदेश थिला एबे नेक्स्ट जीवा 13 नंबर क्वेश्चन आंसर अछि बट मु तमन को देखिया को चाहि कि एक्सप्लेनेशन केमिति जिंसो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एटा हमर डीपीएसपी पिले
DPSP directive principle of state policy गोटे प्रकार instruction to the government while formulating any policy they have to follow certain things. So ये होची तमरा okay. So ये होची DPSP. These instruments of instructions were issued to the Governor General and governors of the colonies and to those of India by British government. ठीक है तो part of 4 of Indian Constitution रे जिनसो 14th question को जदि आसीबा this is distribution of power between the center and the state in the Indian Constitution is based on the scheme provided. एटा मने रखियो समस्ते Government of India Act 1935 हिसाब रे. तो you can see here it provided for the establishment of All India Federation consisting of provinces and princely states, but seta hi panatla successful. It divided the powers between the center and the units in terms of 3 lists, जो फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट थिला. तेनु तुमको जे भी पचारिबो जे लिस्ट वाला कांसेप्ट एटा को ईयर बेस करके एटा 1935 एक्ट रे बेस करके. ओके नेक्स्ट को आसीबा. With reference to the Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were provinces ru जो माने थिले से माने होचंदी कोन elected by the provincial legislative assembly. Elected by the provincial legislative assembly. तो मैं ऑप्शन गुड़ा जो देखिबो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, नो डायरेक्ट इलेक्शन वेयर देयर, nominated by the Indian National Congress ना तारो रोल नथिला कि selected by the government for their no, this is also. So the यार आंसर होची तमरा हि जिवो तमरा. So out of 93 seats in the assembly were elected to the, so 389 ru 93 seats guys, okay, elected to the princely states, which are to be filled by the nomination by the heads of the princely states. तो princely states वाला कथा होची इटा, and provinces वाला कथा कौन ना directly elected है हैला. okay 10 lakh रो 1 representative जानती हो तुम माने सेते बेला रही ये हिसाब रे. चलो मैं जूम करके एका थर के सब क्वेश्चन करे देबी. आई होप समस्त विजिबल अछि. जीवा गोटे गोटे. इकोनॉमिक जस्टिस एज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक जस्टिस पले कोडी अछि त मन को लागु जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रीएम्बल ले अछि सर. प्रीएम्बल ले अछि फंडामेंटल राइट रे पॉलिटिकल तो ये ही जो तमरा ऑप्शन बी डीपीएसपी हो गनी. तो यार आंसर है जो पले डीपीएसपी. The economic justice as one of the objective in the Indian Constitution has been provided in the preamble and the directive principle of state policy. ठीक है जी. 17 नंबर क्वेश्चन देखा समस्त. A constitutional government is one which, तो constitutional government कहले तमे कौन बुझो. First, places effective restrictions on the individual liberty pile in the interest of the state authority. No. Constitutional government places effective restrictions on the authority of the state in the interest of the individual liberty. एटा होची ठीक कथा. सोडा मन रखिबो. इंडिविजुअल लिबर्टी पाई जो इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन अथॉरिटी ऊपर लगाए सेटा होची कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रो मेन फीचर बुझि पाला. तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हैज प्रोविजंस लाइक फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, protect individual from any arbitrary state action, because the constitution grants power in the name of the people and the state draws its power from the consent of the people. So here the powerful most sovereign 80 people of India. ठीक है. The constitution says that states will use its powers in the interest of the people. ठीक है. Okay, next, which one of the following objectives is not embodied in the preamble? एमान को भीतर कोटा नाही इबल. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप तमे जानिछो. इकोनॉमिक लिबर्टी कोठी भी मेंशन हे नाही. सो एटा तमे आराम से आंसर करि पारिबो. हां कि नहीं गला. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड कोठी भी रिफ्लेक्ट करछ प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रे रिफ्लेक्ट करछ है ना. इंडिया को केमिति देखिया को चाहूले कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सेटा तुमरा ठीक है. डन. नेक्स्ट कोडिया नंबर. द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर कहा को दिया इतला रेसिड गवर्नर जनरल को. एबे जेमति रेसिड्यूरी पावर कहा पाखरे अछि यूनियन पाखरे अछि. बुझी पारछो तो समझते हैं ठीक. 21 नंबर क्वेश्चन जोतिर किछि एक्सप्लेनेशन दरकार नै हम करौनी है. नेक्स्ट एमान को भीतर करेक्ट फाइंड करबा.
The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. कहबो टिके किछि कहबाको चाहिबो 2023 OCS एई वर्ष जो एग्जाम माने 2022 रटा 2022 पेपर टिके खोलिबो एई क्वेश्चन टा मु डिस्कशन करूथली हैला and see the thing is here এটা ডাইরেক্ট as it is क्वेश्चन पड़ी पिले as it is add on है कि देखुछ तो PYQ केते काम रे आछी लास्ट 5 वर्ष UPSC एंड OPSC काम रे आसीबो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स इट बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करूची किछि भी हियर यू कैन सी it is incorrect as this doctrine was laid down by the Supreme Court in the landmark Kesavanand Bharati case. The principles contained under this doctrine, such as rule of law, secular nature of the state, cannot be removed, altered by the parliament, even by the constitutional amendment. These are the things. So this is Supreme Court, not the Constitution of India. So Constitution of India defines koroni 8 terms re. Supreme Court या को बेसिक स्ट्रक्चर हिसाब रे नहीं छी. Supreme Court. The Constitution of India provides for the judicial review to safeguard the citizens' liberty and to preserve the ideals on which the Constitution is based. Yes, this is true. So only 2 is true. ठीक है? Only 2 true है जी. देखो, here you can see the doctrine of basic structure is neither defined nor mentioned anywhere in the Constitution. Clear समझता हूँ? ठीक है? Next question, 22 number question. The preamble to the Constitution of India is कौन? Is a part of Constitution and has no legal effect. ना legal effect रहिबो ना नहीं. देखो, is a part but has no legal effect. सी कौन पचाची? हाँ, अच्छा, पढ़ो ठीक से. Not a part नहीं. This is a part. Part and has same legal effect. No, has no legal effect independently of other parts. You can see here the preamble. India is a part of Constitution but has no legal effect independently of other parts. Supreme Court in Berewari case, guys. Berewari case re had held that preamble is not a part. But later Kesavanand Bharati case re declare kala this is a part. Hala? And Constitution should be read and interpreted in the light of the noble vision of the expressed in the preamble. ठीक अछि. सो ए जिंस को ठीक से देखिए. 22 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को जिबा. व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? तो आमे थिलु सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. पोरे सोशलिस्ट सेक्युलर ऐड हला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे. सो दिस इज 26 जनवरी 1950 को जेतेले कॉन्स्टिट्यूशन लागू हला सेतेले इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन थिला. 24 नंबर क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे गाइस. द क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस रे अछि. स्टेटमेंट 1 कोन देछि पचार चे मान को भितरु इज करेक्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th November every year to promote constitutional values among the citizens. करेक्ट अछि. ठीक अछि. 26 नवंबर को हमें कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से सेलिब्रेट करू. अच्छा, 26 नवंबर को आउ को डे सेलिब्रेट करू तुम माने कहबो टिके. On 26 November 1949 the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under no not on this day. ए डे रे नहीं. ड्राफ्टिंग कमिटी तो आगुरु तुमरा फॉर्म कराइतला. हाँ कि नहीं? ओके, ए डे रे बस एटा को ये कराइतला. तो ड्राफ्टिंग कमिटी को डेट को को डेट रे कॉन्स्टिट्यूट हेतला 1947 रे हेतला बेले. तो डेट एग्जैक्ट तुम माने मते कमेंट सेक्शन रे जणेबो हैला. ठीक अछि. एटा होची आज रो सेशन. आज इवनिंग रे जो गूगल मीट रे रहइबो 10 टा रे राती 10 टा रे नॉर्मली 15-20 मिनिट रो डिस्कशन रहउची. आज 18-19 रो 2018-19 OCS रो हमें ज्योग्राफी रो क्वेश्चन डिस्कशन करियो. ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर दिस लवली सपोर्ट. डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स.